हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। आप सब जानते होंगे बच्चों की सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया इज़ वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज नोन एज सिकल सेल डिजीज़। सिकलिंग मतलब होता है हसिया का शेप या हाफ मून शेप। It affects the shape of RBC, which carries oxygen to the all part of body. Red blood cells are usually round and flexible. Generally our RBCs round and flexible होती हैं, so they move easily through the blood vessel. In sickle cell anemia, what happens? Some RBCs are shaped like sickles or crescent moons. These sickle cells also become rigid and sticky, which can slow or block blood flow. तो अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते, कैसे हम पहचानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया है किसी में? तो इसका है सबसे पहला प्राइमरी सिम्टम इज़ द एनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। दूसरा, एपिसोड्स ऑफ पेन होते हैं, शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी एंड विजन प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत। अब सिकल सेल एनीमिया के कॉजेज़ क्या हैं? सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय change in the gene that tells the body to make the iron rich compound in red blood cell called hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन enables red blood cells to carry oxygen from lung throughout the body. The hemoglobin associated with sickle cell anemia cause red blood cell to become rigid, sticky and mishaps. For a child to be affected, both mother and father must carry one copy of sickle cell gene, also known as sickle cell trait. अगर एक फादर और मदर कैरी करते हैं एक जीन, this is called as trait, sickle cell trait, and pass both copies to the altered form to the child. If only one parent passes the sickle cell gene to the child, that child will have to sickle cell trait. मतलब दो में से किसी एक पेरेंट में अगर सिकल सेल ट्रेट है तो वो बच्चे को पास तो कर देगा, लेकिन उस बच्चे में वो प्रॉपर बीमारी नहीं होगी, ट्रेट होगा। विद वन टिपिकल हीमोग्लोबिन जीन एंड वन ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ जीन, पीपल विद द सिकल सेल ट्रेट मेक बोथ टिपिकल हीमोग्लोबिन एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन. Their blood might contain some sickle cells, but they generally don't have any symptom. सिकल सेल्स ब्लड सेल्स दिख जाते हैं पर इनमें कुछ सिम्टम्स नहीं होते. दे आर द कैरियर ऑफ द डिजीज़. द कैरियर मतलब एक जनरेशन से दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके अपने आप में ये बीमारी नहीं होती, केवल ट्रेट रखते हैं अपने साथ. हाउएवर, विच मीन्स दे कैन पास द जीन टू देयर चिल्ड्रन. नाउ व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ सिकलिंग ऑफ RBC? Mutation in globin gene that alters the protein composition but not necessarily the amount of expression are referred to as qualitative mutation. Of the mutations leading to qualitative alteration in hemoglobin, the missense mutation in the beta globin gene that cause sickle cell anemia is the most common. Mutation causing sickle cell anemia is a single nucleotide substitution
which is A to T, adenine to thymine in the codon for amino acid 6. The change converts glutamic acid codon, which is GAG, guanine, adenine and guanine, to a valine codon, which is GTG. मतलब GAG में A को रिप्लेस कर देता है T, तो वो T जो GAG जो कोडॉन है ग्लूटामिक एसिड का वो बनाता है वैलिन. दिस म्यूटेशन इज designated G6V. The form of hemoglobin in person with sickle cell anemia is referred to as hemoglobin S, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन को कहते हैं हीमोग्लोबिन A. Now what are the complications? Number 1, stroke. A stroke, sickle cell can block blood flow to an area of the brain, and sign of stroke include seizures, weakness or numbness of the arm and legs, sudden speech difficulty and loss of consciousness. If your child has any of these signs and symptoms, seek medical treatment immediately. A stroke can be fatal. Second complication is acute chest syndrome. A lung infection or sickle cell blocking blood vessel in the lung can cause this life-threatening complication, resulting in chest pain, fever, and difficulty in breathing. It might require emergency medical treatment. Pulmonary hypertension. People with sickle cell anemia can develop blood pressure in their lungs. This complication usually affects adults. Shortness of breath and fatigue are common symptoms of this condition, which can be fatal. और organ damage. अब sickle cells हैं तो organ damage करेंगे. Sickle cell that blocks blood flow to organ deprive the affected organs of blood oxygen. In sickle cell anemia, blood is also chronically low in the oxygen. This lack of oxygen-rich blood can damage the nerve and organs, including kidney, liver, and spleen, and can be fatal. Next complication is splenic sequestration. A large number of sickle cells get trapped in the spleen, causing enlarged spleen and possibly causing belly pain on the left side of the body. This condition can be life-threatening. Blindness, अंधापन भी हो जाता है. Sickle cell can block tiny blood vessel that supplies eye. Over time, this can lead to blindness. Leg ulcers. Due to poor oxygen supply, sickle cell anemia can cause painful open sores on the legs. Gallstone. The breakdown of RBC product produces a substance called bilirubin. A high level of bilirubin in the body can lead to gallstone. Priapism. In this condition, men with sickle cell anemia can have painful long-lasting erection. Deep vein thrombosis. Sickling of RBC can cause blood clots, increasing the risk of clot lodging in deep vein, which is called as deep vein thrombosis, or a lung. Pulmonary embolism either can cause serious illness and pregnancy complication. How can we prevent sickle cell anemia? आपको बताएं, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते. If you carry the sickle cell trait, seeing a genetic counselor before trying to conceive can help you understand your risk to having a child with sickle cell anemia. A genetic counselor
can also explain possible treatment, preventive measures and reproductive option. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा. नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें. एनी टाइम एनीवेयर. थैंक यू. सी यू अगेन.